मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। फॉरेन विजिट ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी 25 से 26 फरवरी 26 इजराइल, फरवरी 7 से 8 मलेशिया, 15 से 18 दिसंबर जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान, 21 से 23 साउथ अफ्रीका, नवंबर में 25 में गए थे, 11-12 भूटान, उतना याद तो नहीं होगा, सितंबर जापान एंड चाइना, यूनाइटेड किंगडम, 25 में मालदीव्स, घाना, ट्राइनिडैड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड नामीबिया, साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया, सऊदी अरबिया, थाईलैंड, श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस एंड यूएसए, द्रौपदी मुर्मू, अंगोला, बोत्सवाना, इटली एंड वेटिकन सिटी, पुर्तगाल एंड स्लोवाकिया, स्टॉर्म एंड साइक्लोन इन द ईयर 25, बितवा, श्रीलंका, यमन ने उसका नाम लिखा था, कालमेगी, फिलीपींस और वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, मेलिसा, जमाइका, क्यूबा, हैती, बहामास, मोन्था, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, थाईलैंड, शक्ति, अरेबियन सी, महाराष्ट्र, गुजरात, श्रीलंका, मैटमो, फिलीपींस, चाइना, वियतनाम, लाओस, हैलोंग, जापान, वियतनाम, रागासा, ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, फिलीपींस, अल्फ्रेड, साउथ ईस्टर्न कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया। चेंज नेम ऑफ द मेजर प्लेस, केरलम, रातापानी टाइगर रिजर्व, विष्णु श्रीधर बाकानकर टाइगर रिजर्व, महात्मा गांधी एमजी नरेगा, वीवीजी रैमजी, पीएम सेवा तीर्थ, राजभवन, लोक भवन, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कर्तव्य भवन, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, छत्रपति संभाजी नगर, नाबी, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टीबी पाटिल इंटरनेशनल, अहमदनगर रेलवे स्टेशन, अहिल्यानगर, अटल मोहाली क्लिनिक, मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक, डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट, डॉक्टर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट, खुलदाबाद सिटी, रतनपुर, जलालाबाद उत्तर प्रदेश, परशुरामपुरी, इस्लामपुर महाराष्ट्र, ईश्वरपुर, गयाजी, सिल्क यार्ड टनल, बाबा बौखानग टनल, बंगलोर सिटी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, फोर्ट विलियम, विजयदुर्ग, कार्नेक ब्रिज, सिंदूर ब्रिज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ अमेरिका, पोर्ट ब्लेयर, श्री विजयपुरम, पुणे एयरपोर्ट, संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट, कक्सर ब्रिज इन लद्दाख, कैप्टन अमित भारद्वाज ब्रिज, सराय काले खान चौक इन दिल्ली, बिरसा मुंडा चौक, दरबार हॉल, गणतंत्र मंडप, अशोक हॉल, अशोक मंडप, जोशीमठ नगर, ज्योतिर्मठ मठ, कोसी-कुटौली तहसील, कैचीधाम, कोसी-कुटौली तहसील को कैचीधाम, अहमदनगर, अहिल्यानगर, चिरंजीवी योजना राजस्थान, चीफ मिनिस्टर आयुष्मान आरोग्य योजना, अयोध्या रेलवे जंक्शन, अयोध्या धाम जंक्शन, झेलम स्टेडियम जम्मू एंड कश्मीर में, जनरल बिपिन रावत स्टेडियम, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, चंद्रनगर प्रपोज्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ओल्ड पार्लियामेंट संविधान सदन, मेजर एमओयू साइंड इन द ईयर 25-26 मार्च, टाइम देखना ज़रूरी नहीं है, साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यूरेनियम सप्लाई एंड अदर मिनरल्स, इंडिया कनाडा, इंडिया फिनलैंड, साइनिंग एनवायरमेंट कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑफ कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ ट्राइबल एंड एथनिक डेवलपमेंट, इंडिया वियतनाम, MOU signed for postal express and logistic service, India Germany, agreement to enhance cooperation on medicine quality standard, India Liberia, memorandum of MOU signed on mutual submarine search and rescue assistance, India Vietnam, MOU signed with diplomatic training institution, India Ecuador, MOU signed on cultural cooperation, India Saudi Arabia, agreement on cooperation in renewable energy, healthcare and pharmaceutical sector, India Bhutan, MOU for strengthened operational partnership between armed forces, India Australia, signed on cooperation on joint lending arrangement, India Japan, agreement to establish first cross border railway link, India Bhutan,
Agreement to establish a satellite tracking and communication center, India Mauritius. Memorandum signed on defense cooperation, India Morocco. Agreement to promote investment and provide security to investors, India Israel. Enhance maritime security and safety cooperation, India UAE. Strengthen cooperation in the field of fishery and aquaculture, India Maldives. Enhance cooperation in trade, health and digital payment sector, India Namibia. Signing of submarine cooperation agreement, India South Africa. Signing agreement for construction of India's first indigenously built polar research, India and Norway. Signing MOU for zero carbon emission by 2070 and enhancing cooperation in energy sector, India Denmark. Signing of AOM on Buddhist cooperation, India Vietnam. On signing of MOU on Ayurveda agriculture and culture, India Angola. Signing agreement worth 63,000 crore for purchase 26 Rafale marine fighter aircraft, India France. New days started in recent year. Ayurveda Day 23 September. Government of India announced to celebrate Ayurveda Day on 23 September every year. Women Teachers Day 3 January. Government of Telangana announced to celebrate birth anniversary of Savitri Phule as Women's Teachers Day every year. World Meditation Day 21 December. United Nations General Assembly unanimously adopted a resolution, World Meditation Day, co-sponsored by India. Namo Bharat Divas 21 October. This day was celebrated on the occasion of completion of 1 year of Namo Bharat train operation. Hyderabad Liberation Day 17 September. According to announcement of Home Ministry, Hyderabad Liberation Day will be celebrated in the memory of 17 September 1948 when Hyderabad was liberated from the rule of Nizam under Operation Polo. संविधान हत्या दिवस 25 जून. Central government has announced to celebrate 25 June every year संविधान हत्या दिवस from 25 June 1975 to 21 March 1977. National emergency was imposed in India by India's Indira Gandhi government, in which constitutional provisions are allegedly suppressed. International Day of Potato 30 May. UNG designed 30 May as the International Day of Potato to raise awareness of multiple nutrition, economic, environmental and cultural value of potato. World Football Day 25 May. UNGA passed proposal to celebrate 25 May every year as World Football Day. International Markhor Day 24 May. UNG announced celebrate 24 May International Markhor Day. Markhor is known for screw-horned goat, wild goat. It is national animal of Pakistan. World Basketball Day 21 December. UN announced to celebrate first World Basketball Day on 21 December to commemorate the invention of basketball by Dr. James Naismith in 1891. No Non-Veg Day 25 November. Uttar Pradesh government to celebrate Meat Free Day on 25 November on the occasion of birth anniversary of Sadhu T.L. Vaswani. National Space Day 23 August. Prime Minister Narendra Modi announced celebrate 23 August every year National Space Day to commemorate successful landing of Chandrayaan 3 on South Pole of the Moon. स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस 28 मई. Every year Government of Maharashtra announced celebrate B.D. Savarkar birth anniversary 28 मई स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस. समर्पण दिवस 11 फरवरी. डेथ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीन दयाल उपाध्याय. नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर. स्टैंडिंग कमेटी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेलिब्रेशन of National Dolphin Day 5 October every year. Purpose organizing this day to raise awareness for the conservation of dolphin species. मैत्री दिवस 6 दिसंबर. India and Bangladesh decided to celebrate December 6 मैत्री Day. On this day, the year 1971, India gave recognition to Bangladesh. National Startup Day 16 January. Seeing continuous increase in the number of startups in India in last 2 years, the central government announced the celebration of this day on 16 January. Parakram Divas 23 Jan.
Central government has decided to celebrate 125 birthday of Subhash Chandra Bose as Parakram Divas now every year 23 January. Veer Bal Divas. Prime Minister Narendra Modi announced celebrate 26 December every year Veer Bal Divas to pay tribute to 4 sons of Guru Gobind Singh. जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर. Central government decided to celebrate birthday of Bhagwan Birsa Munda as जनजातीय गौरव दिवस. Partitions Horrors Remembrance Day 14 अगस्त. Prime Minister Narendra Modi decided 14 अगस्त every year Partition Horror Remembrance Day as the partition of India-Pakistan took place on this day. New brand ambassador appointed in the year 25-26. National Census 27 Sudarshan Patnaik. Brand ambassador of global brand UniQLO Jasprit Bumrah. Brand ambassador of Bhim UPI Mahendra Singh Dhoni. SBI General Insurance Pankaj Tripathi. Pradeep Phosphate Limited Rahul Dravid. UNICEF India Celebrity Advocate for Children's Rights Kirti Suresh. T20 Men's Cricket World Cup 26 रोहित शर्मा. हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन ब्रांड एम्बेसडर सफाली वर्मा में फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दीपिका पादुकोण. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंटल हेल्थ एम्बेसडर अभिनव बिंद्रा. विकसित भारत बिल्डथन 25 ब्रांड शुभांशु शुक्ला. लिवाइस आलिया भट्ट. बिहार इलेक्शन स्वीप आइकन नीतू चंद्रा एंड क्रांति प्रकाश झा. नमो युवा रन कैंपेन मिलिंद सोमान. जोमैटो ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान. झारखंड स्टेट टूरिज्म महेंद्र सिंह धोनी. कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अनिल कुंबले. ऑडी इंडिया नीरज चोपड़ा. वर्ल्ड पारा एथलीट कंगना रनावत. ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मालदीव्स कटरीना कैफ. फेडरल बैंक विद्या बालन. टाटा मोटर विक्की कौशल. फिट इंडिया आइकन आयुष्मान खुराना. पूमा इंडिया पीवी सिंधु. खो खो 25 सलमान खान. इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर रश्मिका मंदान. मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटर मनु भाकर. ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म पंकज त्रिपाठी. ब्रांड एम्बेसडर ऑफ थाईलैंड टूरिज्म डिपार्टमेंट सोनू सूद. 18th लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट 16 मार्च मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केम इनटू फोर्स. 7 फेज में हुआ था. 19 अप्रैल से 1 जून तक. रिजल्ट डिक्लेयर 4 जून. नो पार्टी गोट क्लियर मेजोरिटी. बीजेपी 240 36.56% वोट. INC 99 21.19%. समाजवादी 37 4.58%. AITC 29 4.37%. DMK 22 1.82%. TDP 16. JDU 12 1.5%. टोटल वोटर टर्नआउट 65.79%. Lakshadweep recorded highest voter turnout 84, followed by Assam 81. Lowest voter turnout Bihar 56.19. Jammu Kashmir 56.58. Average age of elected MP 56. 3 MP are 25-year-old. Oldest MP TR Balu of DMK 82 years. A total 74 women MP have been declared victorious, which is four less than the 78 women MP of the last Lok Sabha election. 216 MP who won in the 19 Lok Sabha were also elected in current Lok Sabha. 46% of MP in the 18th Lok Sabha criminal cases registered against them. Lok Sabha 7 independent MP, 25 Muslim and 3 Buddhist MP. During counting 18th Lok Sabha Indore Lok Sabha seat registered 3 new records in India. BJP candidate Shankar Lalwani got highest number of voters 12,26,751. Shankar Lalwani defeated his opponent Sanjay Solanki BSP by the highest margin 11,75,092. Nota got maximum number of voters 2,18,674 for Indore Lok Sabha seat.
Highest number of vote Nota has received in any Lok Sabha and Vidhan Sabha election till date. In year 2019, Nota got highest number of vote, that is 51660. Gopalganj, Bihar. BJP candidate Mukesh Dalal won election unopposed from Surat. Sri Narendra Modi became the second person after Pandit Jawaharlal Nehru to take oath as Prime Minister for the third consecutive time.